But now I'm a calm parent, so I always stay calm when he comes to me. I always hug him and politely I will always ask him what you need, Abhi. I always keep his feeling like this. Keep okay. I will listen to you, beta. What you are feeling right now, and yes, because their feelings are always matters. Welcome to Money Smart Families. We are today joined by Ritika. Ritika is an entrepreneur. She's a parent of one and an influencer as well, with 5 years of experience when it comes to certified coaching. So welcome on the show, Ritika. Thank you, thank you. So how is parenting going for you? And the best part is you're also a parenting coach. It's a roller coaster for me, and I have seen lots of tantrums. So yes, I was very struggling parent. So then I came to in parenting things and I become a parenting coach for that, and now I am able to handle him very well, and I can doing my best. So I think अब जो हम conversation करेंगे that will be more about you as a parenting coach. तो एक तरीके से आपको एक pedestal पे या role model की तरह moms are seeing you, Yes. and parents are also seeing you. I think not just moms but dads also. So to hear from you कि आपकी फैमिली कैसे मनी स्मार्ट फैमिली है, आपकी पेरेंटिंग में क्या डिफरेंस है, या एज अ पेरेंटिंग कोच आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे, हम उन चीज़ों पे फोकस करेंगे शो के अंदर. द फर्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू इज हाउ डू यू एस्टैब्लिश effective communication with children, especially because they are growing, Obviously. right? And it changes age to age. So what are those effective techniques? In general, I always set up boundaries. What you can do or what you can't do. So he knows mama will give it or will not give it. He knows very well. So he don't make a tantrums for that. And yes, always be calm. Whenever he comes to me, my face always smiling. Not before that, no. I always like, Abhi, please kar do na, please kar do na. So he knows me very well कि mama is not in calm mode, and he start like behaving the tantrums from his side, and I also throwing the tantrums that time. So now I am a calm parent, so I always stay calm when he comes to me. I always hug him and politely I will always ask him what you need, Abhi. I always keep his feeling like this. Keep okay. I will listen to you, beta. What you are feeling right now, and yes, because their feelings are always matters. If we will say कि नहीं बेटा आपकी feelings कुछ है ही नहीं, ये छोड़ो, सब ये मत करो, तो I guess हम एक ऐसे बच्चे को रेस नहीं करेंगे जो विदाउट फीलिंग्स हो. सो I always promote कि उसकी feelings को Respect. करो. Absolutely. So yeah, I think बहुत important बात है that effective communication का base तभी है when you're respecting each other's boundaries, each other's tantrums, each other's feelings, and then आप वो चीज़ emote कर सकें. I think the second thing that we want to ask you is कि कुछ ऐसी strategies for managing a child जो इसका challenging behavior हो. Challenging behavior like hitting or maybe तो I think कई ना बच्चे develop कर लेते हैं. develop कर लेते हैं, and obviously we need to understand why this is going on. Why we need to understand the unmet feelings, and we always like set the pattern for the kids. We don't understand that कि we are setting the pattern about the first we have to, but the first we are giving to the things. Now we just want to give the things, so they understand very well कि कल तो दिया था, आज क्यों नहीं दे रहे हैं. So we need to understand the things कि what we are doing it from that, so we can recondition the kid कि कैसे हम उसको दोबारा से उस चीज़ को जो चीज़ें गलती कर चुके हैं उसको कैसे ठीक करना है. So we set the boundaries. We need to calm down that time. We need to very polite while doing this again. So they understand कि ठीक है, mama is listening to me and mama is giving me things, and we are doing this with the discipline man. So they will understand and they will set the boundaries. Otherwise अगर हम लोगों को, and we have to do it consistently. आज हम दे रहे हैं और कल नहीं दे रहे तो बच्चे को भी obviously they will throw the tensions. इसके अंदर आई थिंक एक बहुत बड़ा रोल है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का. हाउ डू यू बिलीव दैट पेरेंट्स, सम टिप्स फॉर पेरेंट्स टू यूटिलाइज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट? Positive reinforcement, so first of all you have to start with listen to your child.
When you listen to your child, then you know what your child needs to do. I'm not saying कि you have to do it completely or you have to, because अगर बच्चा आपसे ये कह रहा है कि मुझे ऊपर से कूदना है तो मैं आपसे कूदने के लिए तो नहीं दूंगी obviously. When you are their side now, when you are their team, so they understand you completely कि yes mama is my side and mama is listening to me. So वो चीज़ें थोड़ा सा कामली हैंडल हो सकती है. मे बी हम उसको आज ना करके थोड़ा सा शाम तक कर सकते हैं. आप जब कम्युनिकेट बच्चे के साथ अच्छे से करते हो, कम्युनिकेट करने के लिए वी हैव टू कनेक्ट. जब वो कनेक्शन बनता है, कनेक्शन तब बनता है जब हम उनको प्यार, एम्पैथी दिखाते हैं बच्चों को, ऑलवेज क्रिटिसाइज नहीं करते, ऑलवेज करेक्ट नहीं करते. तो वो सब चीज़ों में हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा कि हम बच्चों को करेक्ट कम करें और कनेक्ट ज़्यादा करें. So आप entrepreneur हैं, you are an influencer, you're also a mother, at times you are a parenting coach, and then sometimes you're also a wife, a daughter-in-law. मतलब इतने सारे roles हैं. So do you feel कि कहीं ना कहीं there is a balance which is missing in your life? Yes, balance not missing, but yes, I'm managing things very well because I am doing everything pre-planned. अगर वो प्री प्लानिंग नहीं करती वन डे बिफोर और अ वीक बिफोर, सो येस इट विल बी अ चैलेंज फॉर लाइक नेक्स्ट डे. सो आई ऑलवेज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग 1 hour बिफोर माई फैमिली विल गेट अप, एंड येस मील मेन्यू ऑब्वियसली आई सेट फॉर द वीक. येस वी दिस इज द मेन्यू फॉर द वीक. एंड कम्युनिकेट भी कर देते हैं पूरी फैमिली को आप? एक्चुअली माई फैमिली इज न्यूक्लियर, सो इतना मुझे चैलेंज नहीं होता. बट हाँ येस, क्योंकि बिकॉज इन द लॉन्ग फैमिली तो थोड़ा सा इश्यूज हो सकते हैं. बट इन माई फैमिली आई नो वॉट इज़ द स्केड्यूल ऑफ देयर फील्ड, सो मुझे पता है कि क्या क्या बनाना है, कैसे कैसे बनाना है. आई ऑलवेज से कि दिस इज द मेन्यू एंड आई हैव टू फॉलो दिस. येस, एंड आई ऑलवेज प्री प्लान माई सेट विद द ड्राइवर थिंग कि मतलब कहाँ कैसे उसको जाना है, आना है, बच्चे को पिकअप करना है, ड्रॉप करना है, सब कुछ प्री प्लान होता है. सो मुझे इतना हैक्टिक फील ना हो. When you are in a hurry, मतलब जब आप आज के आज प्लान करते हो ना सारी चीज़ें, तो आप मतलब बिल्कुल पजल हो जाते हो और इन दी एंड आप कहते हो मुझसे नहीं हो रहा. वो चीज़ ना हो इसलिए आप प्री प्लान करते हो कि नेक्स्ट डे आप थोड़ा प्री प्लानिंग में चलोगे. थोड़ा सा मॉर्निंग उठ के आप अपना आप को थोड़ा सा रिलैक्स करो, मेडिटेशन करो, योगा करो. व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी ना, देन everyone feel in your मतलब in a family you feel very good when you are happy. So you have to give time to yourself. तो कुछ ऐसी important life skills as a parenting coach that you recommend parents कि वो definitely build करें? If you want your child, you want to see your child to be confident, start praising them for little things. Just if you want to see your child be like fulfill of fun or fun going person forever, so वो आज आप छोटी छोटी चीज़ों को enjoy करना शुरू कर दो for his small wins. If you feel like कि मेरे child में ये सब चीज़ें दिखनी चाहिए या कोई विज़न रखते हो आपकी, हाँ ये होना चाहिए, then we have to start working today. लाइक कि हमने आज एक बीज बोया है और हम उसको एक बड़ा करते हैं, तो उसको जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वी हैव टू पुट इट. कुछ इफेक्टिव डिसिप्लिन स्ट्रैटेजीज जो आप बताना चाहेंगे पेरेंट्स को फॉर डिफरेंट एज ग्रुप एंड पर्सनैलिटीज? Discipline, obviously every child is a very different, so we have to manage how he reacts after this discipline if we put it. So discipline we can with the positive reinforcement. If you are doing it like beta, you have to do it, and your tone, your body language is very different what you are saying, then child will not understand. So I think this show of Money Smart Families is all about how as a family you're becoming money smart. So have you started having these conversations with your son? Yes. When he asks always about the toys, I always give the budget. This is the budget for a month. Either you spend in a one time or slowly. तो इसके अंदर क्या उनके खुद के डिसीजंस होते हैं और इट इज आल्सो योर? नहीं, obviously if we want child confidence, so I have to give that decision to them. I always give the consequences कि yes, if you will do this, then it will happen this. Now child need to decide what he has to do. If you want to improve that budget friendly things and
your your child should be very independent about the financial things. So then you have to just inculcate it from today. अब इसके अंदर अगर बच्चा मिस्टेक करेगा तो करेगा तो मिस्टेक से ही सीखते हैं. हमने भी बहुत गलतियाँ की हैं, तो हमने बड़े होकर गलतियाँ करते हैं तो बच्चा भी करता है. ठीक है, you given the consequences. Now child needs to decide what to do or not. अगर गलती करते हैं तो now you have to say it. It's your decision, not ours. Child will listen it. Child will understand it. Maybe they will not do it in the next time. सो रितिका, कभी कभार हमें पेरेंट्स कहते हैं कि पैसों की बात करेंगे तो उनकी इनोसेंस चली जाएगी. क्योंकि बिकॉज आज तो बिना मनी के तो कुछ है भी नहीं. तो इनोसेंस का कुछ नहीं है. बच्चे को पता होना चाहिए कि हाउ टू यूज द मनी. आज कोई भी मेरे पास आता है, बोलता है कि PS5 चाहिए. PS5 तो आपने दे दिया, तो वो इनोसेंस नहीं लेके जा रहा, तो पैसा कैसे इनोसेंस लेके जा रहा. क्या ये कॉन्वर्सेशन टैबू बन गई है बच्चों के साथ? किड्स मतलब इन टुडेज लाइफ पेरेंट्स वांट टू गिव बिफोर दे आस्क. और फिर बच्चा को समझ आ जाता है कि दे कैन गेट एनीथिंग एनी टाइम एनीवेयर. Then we give them the things when they ask, or we give them before they ask. The child mind just prepared with that. The pattern is set. I can get anything, anytime. जो ये माइंडसेट बच्चे का इनकलकेट हो जाता है, वैल्यू सिस्टम रिगार्डिंग मनी के बारे में, सो हु इज टू ब्लेम? इज इट द मदर टू ब्लेम? इज इट द फादर टू ब्लेम? व्हाट हैपेंस इन योर फैमिली डायनामिक्स? Yes, it should be a mutual. I know it's very difficult to sometimes Papa give or sometimes Mama give, or we blame grandparents as well, always. मेरे ये तो दादाजी दे ही देते हैं, मैं मना करता हूँ तो वो हर चीज़ ब्लेम फॉर्म में आ जाती है. बट आई थिंक वी शुड डिस्कस दिस थिंग कि इसके करने से क्या इफेक्ट होगा. ठीक है, यू वांट टू गिव इट, दैट्स ओके. बट इफ अगर वो चीज़ घर आती है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. वी शुड अंडरस्टैंड व्हेन दे नो द सिनेरियो. बिकॉज समटाइम्स कभी कभी हम लोग एक पेज पर नहीं होते. व्हाट वी आर थिंकिंग दे डोंट नो अबाउट इट, और what they are thinking we don't know about it. So रितिका, कहीं ना कहीं हमने कहा मनी, फाइनेंसेस, मनी मैनेजमेंट, ये टॉपिक्स हैं, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स टू टॉक टू देम अबाउट चाइल्ड, क्योंकि आप खुद वो रैट रेस में होते हैं. Have you felt like this as a parent? Yes, sometimes we cannot convey what we want from the kids, so it's very difficult to tell him कि yes you have to do it. But yes, अगर कोई ऐसा कुछ हमें हेल्प करता है कि कैसे उसमें बच्चे के अंदर ये हैबिट ग्रो करनी है, that will be easy for us. So क्या schools को ये conversation करनी चाहिए? Yes. कैसे करेंगे schools? Schools obviously they can say कि वो पिग्गी बैंक को बना दें, या when they do it everyday things. So obviously schools matter for them. They are daily interacting with the schools only. Either they are at home or at a school. Curriculums तो बिल्कुल नहीं है, but yes they can just do this daily habit of using how to use money or how to like save money day to daily basis. तो कभी कभार स्कूल्स बोलते हैं कि हम नहीं कर सकते टॉपिक, क्योंकि ये तो पेरेंट्स का टॉपिक है, क्योंकि वो तो पेरेंट टू पेरेंट चेंज होगा. Actually the school why they are suffering because क्योंकि schools में हर मतलब स्ट्रॉन्ग लेवल से बच्चे आते हैं, सो उनको लगता है कि शायद मे बी दे विल डू और नॉट डू. बट आई कैन से कि वो इस चीज़ की हैबिट डालना और बाकी उसको फॉलो नहीं करना, दैट डिपेंड ऑन कम्प्लीटली ऑन पेरेंट्स. बट आप बच्चे के अंदर कोई भी चीज़, आपको बिजनेस करना है या जॉब करनी है, ये सब करना है, ये चीज़ आप स्कूल से नहीं सिखाते, बट यू ऑलवेज गिव योर बेस्ट. सो इट्स लाइक हैबिट we can do at home, but कभी कभी बच्चों को ना एक टीचर के कहने से that impact is more than parents. क्या आपके बच्चों ने आगे पूछा है कि आपकी सैलरी क्या है? You know, are they curious about these things? And second, if they ask you, will you be willing to share these discussions with them? I guess no, because I am from business family, so whenever the things came in his mind to buy something,
मैं कहती हूँ he wants Lamborghini. देखो पैसा कहाँ है, दादी देगी. मतलब it's like कि अभी we cannot say कि कितना पैसा ये सब we cannot understand the thing. मेरे पास है ना $8,000 है. I can't like replicate this thinking. What exactly I have to say? But they are aware on what you do, how you do, what your parents do for living. Yes, of course. Because they are getting everything. That means they know what we are doing it. But I have no idea about the service families because how they are dealing with their kids. I am from a business family, so. So जैसे आजकल फैमिलीज के अंदर पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, टीचर्स इन्वॉल्व हैं पेरेंटिंग में, एक बहुत बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का भी आ गया है. एंड जहाँ पे सब क्रिटिसाइज करते हैं कि टेक्नोलॉजी, यूट्यूब, स्क्रीन टाइम, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी सोल्यूशन भी है जब आप बिजी हो, जब फॉर समथिंग एल्स. सो एनीथिंग यू वुड लाइक टू टेल अस एज अ कंपनी जो टेक्नोलॉजीज क्रिएट कर रही है फॉर मॉडर्न फैमिलीज एंड किड्स, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस वी कैन सॉल्व फॉर यू? We need to understand what appropriate for their age because like my child is 5-year-old and he is watching 18 years content and there is no filter or no moderation something we can stop it. If we download the YouTube clips they don't want to see it because they know this is not the right thing. I have to go to the back YouTube and they find it very easily. And there is no filter on it. They can see any foreign language and any inappropriate content. We cannot, and even they getting many random apps which is not good. So I just wanted something. There is a filter. Should be parental control. I know parental controls, but after that we are getting some fishy things. So we should like someone should work on it. So one is video moderation for the child. तो गुड पिगी के अंदर एक हमने फीचर डाला which is called video garage जहाँ पे पेरेंट्स खुद curate कर सकते हैं playlist or they can ask us to curate a playlist just simply by copy pasting a URL and then ask the child to watch it and then reward the child also later in the piggy bank कि आप for example you want him to learn French or you want him to do yoga, then you can make a list of content because it's available for free, right? Hand them over that playlist on Good Piggy and then tell the child that if you finish the playlist then you know there will be a reward for you in your piggy bank. Once the piggy bank में पैसे आ गए तो बच्चा उसको अपने goals के लिए allocate कर सकता है, budgeting सीख सकता है and then आपसे approval ले सकता है to spend it and then receive that product on the doorstep. So that is the entire cycle we allow. So I think that we have already addressed as a company. Yes, that's a very good approach to do it. Even parents is happy and kid is happy. So what we want? So we have incorporated something called as a habit builder. यहाँ पे कुछ ऐसी habits बाहर जो आप outside the phone बच्चे को encourage करना चाहते हैं. It can be reading a day, it can be walking, it can be walking the pet, it can be putting up your bag yourself. It can be anything that you would want the child to do. That you can ask him to correct or to challenge him or to make sure कि वो उसको regularly, consistently, खुद independently कर सके. So that is how we are trying to put in positive reinforcement and good piggy and making sure कि parents को बहुत difficult लगता है छोटी चीज़ें जो चाहते हैं कि बच्चा खुद करने लगे. So this is the gamification method for that. It will take time. Yes, if you say positive reinforcement is necessary for that, and give time, and they will start doing it, watching it. In fact, they watch you, that yes, you are struggling with doing that, so they start doing it. So thank you, Ritika, for making time today and coming to the Money Smart Families episode. I hope you enjoyed watching it, and thanks a lot again for sharing your insights. For having me.